listeners and learners, dear friends, I'm Dr. Rakesh from USA. Heartily cordially welcome all of you. It is really nice time, nice place, nice action. Today is 1st of November. November. In Hindi we says new sky, new thought, and today formation of Haryana. You are listening from the district of Haryana, Sirsa of Haryana. Cultural, traditional, conventional, these words have great importance. Whenever we speak these words, these words help us in knowing our starters, beginners and initiators, creators, generators and operators, our forefathers, foretellers, forecasters, freedom fighters. Such personalities, those who devoted, dedicated themselves for the welfare of humanity. Their aim was to spread out the message of oneness, equality, unity. It is the constitutional identity of our nation. We are known by peace, tranquility of our heart and mind, brotherhood, patience, tolerance, endurance. These are the great virtues and human values that our great men like God filled us with such ornaments of life, and such are the decorative elements of life that God gifted us. Since the beginning of our life, our all holy scriptures holy books
starting this materialistic world, God created Himself in the form of light, ray of light. Earlier, when there was nothing in the world, at that time, God does exist, God did exist. It is said in all the teachings of our holy books, holy scripture of our Indian land, cultural aspect of our India tells us about the bravery, courageousness, fearlessness of the fighters, freedom fighters. That fills us with joy and delight forever. If a mother who has a child in her womb, she should listen patriotic and nationalistic songs. Thereby, the soul that listens inside will be blessed by our nationalistic and patriotic personalities. It is said by all our great men, for employing our youngsters, it is equally important to be devotee of the truth. Such personalities, those who came in this world, on this earth, they spent their maximum time in nature. Nature kept them in present about it. First Prime Minister of India, Honorable Dipawali Nehru, he says in his words that our present lies in the past. Whatsoever we see around us, whatsoever we have around us, that is contributed by our past. Our glory of the present
also depends upon our agriculture. Indirectly we can say nature. Nature is a common concept of all holy beings of this holy land. In the form of nature, we are narrowly steeped. Our different poets, many novelists, dramatists explained about nature as nature is our true friend. So let us be friendly and familiar with nature for knowing the truth of life. What is written in our scriptures? Let us read it. Oh dear Lord, you are mine. Oh प्यारे भगवान, प्यारे राम, you are mine. तुम मेरे हो. Oh dear Lord, you are mine. मेरे नाथ, मेरे प्रभु. There are innumerable ways बहुत तरीके हैं भगवान को प्राप्त करने के. Innumerable, uncounted, countless ways to attain God realization. ईश्वर अनुभूति के बहुत तरीके हैं, अनेकों साधन हमारे धर्मों में वर्णन किए गए हैं. Amongst all those paths, उन सभी मार्गों का यदि हम विश्लेषण करें, I have found a unique path. उन सभी रास्तों से मैंने एक अद्वितीय रास्ता निकाला है, which is uncommon, जो अपने आप में असाधारण है, extraordinary है, साधारण नहीं है, असाधारण लगता है. ये क्या है? It is I belong to God. I belong to God. मेरा भगवान से संबंध है. You may perceive this as ordinary. आपको लगता होगा कि बड़ा साधारण सा तरीका है, बट इन माई ओपिनियन, परंतु मेरे ओपिनियन के अनुसार इट इज एक्सट्रीमली यूनिक. इट इज नॉट ओनली अनकॉमन, बट इट इज एक्सट्रीमली यूनिक. अत्यंत अद्वितीय है. Each one of us is God's child. प्रत्येक हमारे में से भगवान का बच्चा है. हर कोई भगवान की औलाद है. It is not a usual fact.
ये कोई साधारण तथ्य नहीं है। This renders goal realization exceedingly easy. इसमें हम महसूस करते हैं कि भगवान की अनुभूति अत्यंत आसान है। स्वामी जी कहते हैं, earlier you instructed, पूर्व में आपने जो निर्देश दिया, as regarding seeking refuge in God, as earlier you instructed us regarding seeking refuge in God. भगवान में रिफ्यूज महसूस करना और चैंटिंग हिज नेम और भगवान के नाम का सुमरन करना। Then you asked us to regularly repeat. तब आपने नियमित रूप से दोहराने को कहा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ मेरे प्रिय भगवान, आई मस्ट नेवर फॉरगेट यू, हम आपको कभी नहीं भूल सकते। एंड नाउ यू आर टेलिंग अस, और अब आप हमें बता रहे हैं, टू एक्सेप्ट आवर बिलोंगिंगनेस टू गॉड, आज आप हमें बता रहे हैं हमारे भगवान से संबंधों के बारे में। विच ऑफ दी साधना शुड बी फॉलो, हमें इन साधना में से कौन सी साधना को मानना चाहिए। तो स्वामी जी कहते हैं, फॉलो मानो विच आई एम इंस्ट्रक्टिंग नाउ, जो मैं आपको अभी निर्देश दे रहा हूँ इसको मानिए। ऑल साधनास आर एक्सीलेंट, सभी प्रकार की साधना बेहतरीन है। बट एक्सेप्टिंग दैट, परंतु इसको छोड़ करके क्या, गॉड इज माइन, भगवान मेरे हैं। सब प्रकार की साधनाएं एक्सीलेंट हैं। This makes us close to God. परंतु ये भगवान के प्रति हमारी नजदीकी बढ़ाता है। The closer we are to God, हमें भगवान के और नजदीक ले जाता है। The better the worship becomes, हमारी आराधना, हमारी पूजा और भी अधिक बेहतर होती चली जाती है। आगे क्वेश्चन पुट किया है, कैरिंग आउट ऑल डीड्स डिलीजेंटली, सभी प्रकार के कार्यों को डिलीजेंटली करना, या फिर disregarding our belongingness, हमारे संबंधों को लोगों के साथ में, या फिर एक्सेप्टिंग आवर बिलोंगिंगनेस टू गॉड, या फिर भगवान के साथ अपने संबंधों को स्वीकारना। अमंगस्ट द थ्री साधनास, इन तीनों प्रकार की साधना में इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है, टू ब्रेक अवे फ्रॉम आवर अटैचमेंट एंड एवर्जन एंड अटेन लाइब्रेशन। क्या ये हमारे
अटैचमेंट को और एवर्जन को दूर कर देता है और हम आज़ाद हो जाते हैं। तो इसका आंसर स्वामी जी देते हैं, एक्सेप्टिंग आवर बिलोंगिंगनेस टू गॉड, हमारा संबंध भगवान के साथ स्वीकारना, इज द फॉरमोस्ट साधना, ये सबसे बड़ी साधना है। बिकॉज क्योंकि बिकॉज ऑफ आवर एक्सेप्टेंस ऑफ द बिलोंगिंगनेस टू गॉड, क्योंकि भगवान के साथ हमारे संबंधों को स्वीकारना, बाय द वर्चू ऑफ गॉड ग्रेस, भगवान के आशीर्वाद से, अटैचमेंट एंड एवर्जन ऑल्सो रिजॉल्ट, इसमें हमारा भगवान से लगाव प्रदर्शित होता है। इक्विवेलेंसी ऑल्सो कम्स, समानता आती है। सेरेनिटी इज ऑल्सो अटेन्ड, और इससे शांति प्राप्त होती है। एंड लाइब्रेशन इज ऑल्सो फुलफिल्ड, और हमारा स्वतंत्र रहने का अधिकार भी पूरा हो जाता है, हम आज़ाद हो जाते हैं। बिकॉज इन आवर एजेंस वी आर फ्रेगमेंट्स ऑफ गॉड, क्योंकि सब प्रकार के साधारण सामान्य शिक्षाओं के अंदर कहा गया है, क्या कहा गया है? Oh Lord, oh dear Lord, you are mine. By correcting agents, everything else gets corrected. If you wish to effortlessly experience God, यदि आप भगवान के नाम का अनुभव करना चाहते हैं, इच्छुक हैं कि आपको ज़्यादा अभ्यास ना करना पड़े, ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़े, इट इज़ माई रिक्वेस्ट, तो मेरा ये रिक्वेस्ट, मेरी प्रार्थना है, यू मस्ट एक्सेप्ट, आपको मानना ही होगा, आई बिलोंग टू गॉड, मैं भगवान का हूँ। दिस प्रैक्टिस इज मच मोर पावरफुल देन चुप साधना, ये अभ्यास करना अपने आप में मौन रहकर चुप करने से भी ज़्यादा शक्तिशाली अभ्यास है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, ए डॉटर इन योर फैमिली वंस मैरिड, एक बेटी जो आपके परिवार में शादीशुदा हो जाती है, एक्सेप्ट्स दैट, मानती है, आई बिलोंग टू माई हस्बैंड्स प्लेस, कि अब मैं अपने पति के से मेरा रिश्ता जुड़ गया है। सिमिलरली, इसी प्रकार, यू मस्ट एक्सेप्ट दैट, आपको भी ये स्वीकारना है, आई बिलोंग टू गॉड, भगवान जी मेरे हैं, मैं भगवान जी का हूँ। दिस इज एन एक्सट्रीमली एफर्टलेस एंड प्री-एमिनेंट साधना, और ये अत्यंत प्रयास रहित है और प्री-एमिनेंट साधना है। God has himself specified this, प्रभु ने, भगवान ने स्वयं ही ये स्पेसिफाइड किया है, द अल्टीमेट अनटोल्ड सीक्रेट, अंतिम अकथनीय रहस्य, इन द एंटायर इंस्ट्रक्शन ऑफ द गीता, गीता के पूर्ण निर्देशों के बाद, द टर्म, ये टर्म सर्वगुहात्मा, हैज बीन यूज्ड ओनली वंस, एक ही बार प्रयोग की गई है टर्म। आई एम डेयरली स्टेटिंग दिस विद फोल्डेड हैंड्स, और बड़े प्यार से मैं आपको हाथ जोड़कर नमन करके कहता हूँ, दैट इन माई ओपिनियन, मेरे विचार में, दिस इज द फॉरमोस्ट साधना, ये सबसे बड़ी साधना है।
I feel so in my heart, मैं दिल से स्वीकारता हूँ, महसूस करता हूँ. If we accept, यदि हम स्वीकारते हैं, God belongs to us. यदि हम ये स्वीकारते हैं कि भगवान हमसे रिश्ता रखता है, भगवान हमारे हैं, then our task will be quickly done. तो हमारे सारे काम बहुत सरल हो जाते हैं. God is mine. भगवान मेरे हैं. If this is accepted, यदि इसे मान लिया जाता है, then तभी उसी पल a whole lot of our work is done. तो हमारा बहुत सारा काम पूरा हो जाता है. We have already come quite close to God. हम पहले ही भगवान के पूर्ण नजदीक आ चुके हैं. All that we wish to depart from, all that वो सब you wish to depart from, जिससे आप दूर होने की इच्छा रखते हैं, would be achieved by God's grace. वो सब कुछ आपको भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाएगा. God's strength only, सिर्फ केवल भगवान की शक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो जाएगा. इन जानना योगा एंड कर्मा योगा, जानना योग में भी और कर्म योग में भी बोध साधना, दोनों ही प्रकार की साधना, पाथ साधन की एंड साधे आपके मंजिल, आपका डेस्टिनेशन, आर डिस्टिंग्विशेबल. ये दोनों ही डिस्टिंग्विशेबल है. Whereas in भक्ति योगा, और जहाँ तक भक्ति योगा का सवाल है, God Himself is the साधना as well as the साधना. भगवान स्वयं ही साधन है और भगवान स्वयं ही साध्य है. आपको डिस्टिंग्विशेबल लगता है, आपको दोनों के अंदर भेद खत्म लगने लगता है. That's why, यही कारण है, the path of bhakti yoga is comparatively brisker to tread. तो भक्ति योग के जो रास्ते हैं वो तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा तीव्र गति वाले हैं. Everybody is not aware of this fact. हर कोई इस फैक्ट से पूर्णतः जानकारी हासिल नहीं कर सकता. Everybody is not aware of this fact. हर किसी को इस सत्य की जानकारी नहीं है. That's why, इसीलिए मैं कहता हूँ, I keep on emphasizing, मैं जोर देता हूँ. किस बात पे जोर देता हूँ? You must accept our belongingness to God. हम तुम्हें भगवान से संबंधों को स्वीकारना ही है. God is our Father. भगवान मेरे पिता हैं. Each one of us is His beloved son and daughters. हमारे में से ही उसकी बेटियां और बेटे हैं. Accept this, इसे मानो, and consider most of your work completed. और समझो कि आपका सारा काम लगभग पूरा हो गया है. It is better than God's continual remembrance. ये better है कि भगवान की नियमित उपस्थिति, नियमित से सुमन करना. To accept our relationship with God.
ईश्वर से अपने संबंधों को स्वीकारना, क्या कह के स्वीकारना? आई बिलोंग टू गॉड, मैं भगवान का हूँ। ए रिलेशनशिप इज एवर एग्जिस्टिंग, ये रिश्ता हमेशा ही रहता है। Once the relation is embarrassed, यदि एक बार ऐसा रिश्ता हमारा भगवान से बन गया, then good remembrance occurs inherently, तो भगवान की याद inherently अंदर से ही होने लगती है, and doesn't have to be practiced, तो फिर अभ्यास नहीं करनी पड़ती, बस अपने आप ही होती अजपा जाप शुरू हो जाता है। जैसे ही भगवान के अंदर तस्वीर बन गई तो सब काम फिर भगवान ही करने लगते हैं। It happens without any effort, बिना किसी प्रयास के ही ऐसा होने लगता है। I have a mother, हमें महसूस होता है कि मेरी माता है। In this manner we have accepted our mothers, इसी प्रकार हम स्वीकारते हैं कि हमारी माता है। So now we are not required to remember this, माता के होने पर हमें याद नहीं करने की आवश्यकता कि मेरे माता है, इसके लिए कोई तरीके की आवश्यकता नहीं है। Like a rich man is always proud from within, जैसे कि एक अमीर आदमी हमेशा उसके अंदर अमीरी का नशा रहता है। क्या? I have so much money, कि मेरे पास बहुत धन है। Similarly, इसी प्रकार you should also at all times feel proud from within, आपको हमेशा अंदर से गर्व महसूस करना चाहिए। क्या? That I belong to God, मैं भगवान का हूँ। However you are, आप जैसे भी हैं, you must never disregard the fact, आपको कभी भी इस फैक्ट को, इस तथ्य को नहीं भूलना। क्या नहीं भूलना? I belong to my Lord, कि मैं भगवान का हूँ। Be it happiness or sorrow, चाहे आप दुखी हैं या सुख में हैं, health or sickness, चाहे आप स्वस्थ हैं, बीमार हैं, प्रॉफिट और लॉस, चाहे आपको हानि होती है, चाहे आपको लाभ होता है। But I belong to God, God belongs to me, मैं भगवान का हूँ, भगवान जी मेरे हैं। Your mind must never dwindle from this principle, आपका दिमाग कभी भी इस सिद्धांत से परे नहीं होना चाहिए। There is no equivalent path, इसके समान कोई और रास्ता नहीं है। No ability
कोई योग्यता नहीं है, नो स्ट्रेंथ, कोई शक्ति नहीं है, नो प्रिविलेज, न कोई विशेष अधिकार है, then acceptance of our belongingness to God. बस ये छोड़ करके कि मेरा भगवान से संबंध है, भगवान से संबंध को छोड़ करके और कोई रास्ता नहीं है, इतना आसान नहीं, इतना शक्तिशाली है। In the acceptance of God's belongingness, भगवान से संबंधों को स्वीकारना, the mind, the intellect, दिमाग से, बुद्धि से, etc. are not required, इस सब की जरूरत नहीं है। Whereas जबकि in other sadhanas, दूसरे प्रकार की साधनाओं में the assistance of the mind, दिमाग के असिस्ट होने की आवश्यकता होती है, बुद्धि की जरूरत पड़ती है। Even with the persisting absence of sharpened threads in a seeker, एक सीकर में निश्चित विशेषताएं होती हैं कि वो persisting absence में भी भगवान को महसूस करना चाहता है। God chooses to concentrate, भगवान स्वीकारते हैं, चुनते हैं कंसंट्रेशन को on the belongingness, संबंधों के द्वारा, and not the absent traits, absent traits के द्वारा भगवान के प्रति हमारी कंसंट्रेशन नहीं बनती है, हमारे संबंधों से हमारी कंसंट्रेशन बनती है, क्योंकि our belongingness to God is absolute, क्योंकि हमारे संबंध भगवान के साथ वास्तविक हैं। He who accepts this relation with God, और ये वो जो स्वीकार कर लेता है भगवान से संबंधों को, rises above the ordinary, वे साधारण और तरीकों से ऊपर हो जाता है। He becomes a संत महात्मा, और वो एक संत महात्मा बन जाता है। He attained serenity and eternal joy, हमेशा रहने वाली खुशी उसको प्राप्त होती है, शांति प्राप्त होती है, संयम प्राप्त होता है। He becomes carefree of everything else, वह सब चीजों से मुक्त हो जाता है, आजाद हो जाता है। So इसलिए accept that, क्या स्वीकार करो? God belongs to you, भगवान जी आपके हैं, and relax, बस। I belong to God, मेरा भगवान से संबंध है, and never forget this, कभी ये न भूलें, and you will certainly experience God, निश्चित रूप से आप ईश्वर की अनुभूति करते हैं। You will be naturally introduced, तुम स्वतः ही परिचित हो जाते हैं सत्संग से और संत महात्माओं से। The most exceptional thing is, अत्यंत अपवादिक चीज है क्या? An eternal relationship with God,
भगवान के साथ शाश्वत संबंध by the virtue of the acceptance of the relationship, संबंधों को स्वीकारने के गुणों के द्वारा there is rapid augmentation, इससे भी दुर्लभ साधन कोई है। चैंटिंग ऑफ गॉड्स नेम, भगवान के नाम का रिपीटेशन करना, मेडिटेशन करना, कीर्तन करना आर नॉट परपेचुअल, नियमित रूप से आपको करने की आवश्यकता नहीं है। एंड देयर इज ऑलवेज सम इंटरफेरेंस, इनमें हमेशा भी बाहरी इंटरफेरेंस बने रहते हैं। Whereas there is no interference in the relationship with God, जबकि भगवान के साथ तो रिश्तों के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस होता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, by sleeping, जब हम सोते हैं, the marital relationship doesn't vanish। सो जाने से इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे वैवाहिक संबंध समाप्त हो जाते हैं। सिमिलरली, इसी प्रकार इन फॉरगेटफुलनेस और स्लीप, चाहे हम भूल जाएं या फिर हमारे सो जाने से, आवर रिलेशनशिप विद गॉड डजंट वैनिश, हमारे रिलेशनशिप समाप्त नहीं होते हैं। जैसे हम आउल का उदाहरण ले सकते हैं, उल्लू जिसको रात में दिखाई देता है, अब उसके ये मान लेने से ही सूर्य होता ही नहीं, तो ये सर्वविदित तो नहीं है, ये तो सिर्फ उसी के लिए है। ऐसे ही हम यदि लेट जाते हैं, भूल जाते हैं, तो इसका मीनिंग ये नहीं कि हमारा भगवान से संबंध नहीं है। इट इज परपेचुअल एंड एवर एग्जिस्टिंग, ये तो नियमित है और हमेशा ही रहता है। देयर इज एक्जेशन इन परफॉर्मिंग चैंटिंग, चैंटिंग परफॉर्म करने के अंदर एक्जेशन है, बट ए रिलेशनशिप इज नेवर टायरिंग। कोई थक सकता है, जीवा थक सकती है वर्णात्मक नाम को गाते, बोलते, सुनते, देखते, तो जो संबंध है वो अनटायरिंग है। दिस रिलेशनशिप इज इमीडिएट एंड एटर्नल, ये संबंध तो तुरंत बन जाता है और शाश्वत हो जाता है। लाइक मैरिज ब्रेक्स ओनली इफ यू ब्रेक, शादी केवल तभी टूटती है यदि आप शादी को तोड़ते हैं। इफ यू एक्सेप्ट दैट, और यदि आप ये मान लेते हैं गॉड बिलोंग्स टू मी, भगवान मेरे हैं, then no even God can break this, तो भगवान भी आपसे संबंध नहीं तोड़ सकते हैं। और the embodied soul means जीवा is a fragment of God, जीवात्मा भगवान का एक फ्रैगमेंट है, उसका एक पार्ट है। Therefore, इस प्रकार, if he connects with God by any means, किसी भी तरीके से यदि वह हमसे जुड़ जाते हैं, he is certainly liberated, तो वे निश्चित रूप से आजाद हो जाते हैं। A relationship with God invariably
leads to supreme welfare. भगवान के साथ हमारा संबंध इनवेरिएबली leads to supreme welfare, हमें सर्वोत्तम कल्याण की ओर लेकर जाता है। Those who took God by enmity, जिस किसी ने भी चाहे भगवान से संबंध रखा हो, द्वेष के साथ ही न रखा हो, were liberated, वो आजाद हो गए। And those who loved God utterly were also liberated. But those who failed to establish any relation were not liberated. तो जिस किसी ने किसी प्रकार का भी संबंध नहीं बनाया, वो कभी आजाद नहीं होते। If someone expresses that, यदि कोई संबंध बनाता है, God is mine, भगवान जी मेरे हैं, it is extremely pleases the Lord, इससे भगवान बहुत खुश होते हैं। In reality, वास्तव में except for God, भगवान की स्वीकृति के लिए there is no one whom we can call ours. हमें किसी दूसरे को अपना कहने की जरूरत नहीं है भगवान की स्वीकृति के लिए। Due to your materialistic tendencies, आपकी अपनी भौतिकवादी प्रवृत्तियों के प्रति you might become ignorant of God. हो सकता है आप भगवान को अनदेखा करें, but God never forgets you. परंतु भगवान आपको कभी भी नहीं भूलते हैं। एक क्वेश्चन में पूछा गया, क्या पूछा गया क्वेश्चन में? आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड्स रिलेशन, भगवान से संबंध स्वीकारने के बाद कैन गॉड बी रियलाइज्ड, क्या भगवान को महसूस किया जा सकता है इवन ऑन परसिस्टेंस ऑफ वर्ल्डली डिजायर्स, यहाँ तक कि जब हम सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं इच्छाएं बने रहने पर भी या फिर इच्छाएं न बने रहने पर भी क्या भगवान को महसूस किया जा सकता है? तो स्वामी जी का आंसर यहाँ पे है हाँ, God can be realized, भगवान को महसूस किया जा सकता है even on persistence of worldly desires, जबकि हम भौतिकतावादी इच्छाओं के साथ जुड़े हुए हैं। and the desires will not persist once God is realized, जब भगवान की अनुभूति पर हो गई तो फिर संसार की भौतिकतावादी चीजें आपके लिए रुकावट नहीं बनेगी। The principal mistake has been the erroneous embarrassing of what is not ours. ये मुख्य रूप से हम गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं?
एम्ब्रेस करना कौन सी चीज हमारी नहीं है, जैसे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि। एंड हु बिलोंग टू अस, कौन सी चीज है जो हमारे से संबंधित थी, कौन सी चीज हमारी थी, वी डिड नॉट एम्ब्रेस, हमने इसे नहीं एम्ब्रेस किया, वो है भगवान। दिस सिंगल ब्लंडर, ये एक हमारी बहुत बड़ी गलती, ये एकमात्र अकेली गलती इनकम्पासेस एवरी अदर मिस्टेक्स, ये हमारी सब प्रकार की गलतियों को करवाती है। इन मैथमेटिक्स, गणित में, ऑन ओमिशन ऑफ, यदि हम ओमिशन कर दें, छोड़ दें, इवन ए सिंगल स्टेप और डिजिट, एक भी स्टेप को या फिर डिजिट को, एवरीथिंग बिकम्स इनकरेक्ट, तो हर चीज ही इनकरेक्ट हो जाती है, गलत हो जाती है। नो मार्क इज अवॉर्डेड, तो उसके बदले में हमारे को कोई मार्क नहीं मिलते। दैट इज वाई, यही कारण है, यू मस्ट एटलीस्ट एक्सेप्ट, आपको ये स्वीकारना ही चाहिए, आई बिलोंग टू गॉड एंड गॉड इज माइन, भगवान जी मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। टू eternally reveal the Lord, eternally, हमेशा भगवान से इजहार करने के लिए, and to acquire his perpetual love, और लगातार उसके प्रेम को हासिल करने के लिए, it is a must, it is a must to embrace the fact, फैक्ट को स्वीकारना। क्या फैक्ट? गॉड इज माइन, भगवान जी मेरे हैं। लाइक ए चाइल्ड, एक बच्चे की तरह डिक्लेयर्स, हम घोषणा करते हैं, क्या मानते हैं? द मदर इज माइन, माता जी मेरे हैं। इसी प्रकार गॉड इज माइन, भगवान जी मेरे हैं। The sentiment of belongingness towards God, भगवान के प्रति हमारे जो संबंध है, is the mantra for eternal love, ये हमेशा उससे प्यार करने का मंत्र है। It reveals, और ये जाहिर करता है, the presence of God, भगवान के उपस्थिति को। You must invoke, तुम्हें आह्वान करना ही चाहिए। This feeling, इस भावना का, फ्रॉम विदिन, अंदर से, क्या? वाई इज माई मदर नॉट टेकिंग मी इन हर लैप, कि मेरी माता मुझे अपनी गोद में क्यों नहीं उठाती है? यू मस्ट फर्मली बिलीव, तुम्हें पक्के तौर पे ये विश्वास करना होगा, गॉड बिलोंग्स टू यू, भगवान जी आपके हैं। दिस विल हैव एन इमेंस आउटकम, अद्भुत नतीजा आएगा। एंड योर एग्जिस्टेंस, और तुम्हारा होना, तुम्हारा अस्तित्व, विल प्रूव विक्टोरियस, ये आपको विजेता बना देगा। माई हार्ट विल बी extremely delighted, मेरा दिल खुशियों से भर जाएगा। If you do so, यदि आप ऐसा करते हैं, and you will also be happy, और तब आप भी खुश हो जाएंगे, and you will be blissful, आपको आशीर्वाद मिलेगा। This acceptance is pure profit, इसका आपको शुद्ध लाभ मिलेगा। विद नो लॉस ऑफ एनी काइंड, हानि तो कोई भी नहीं होगी। दिस विजडम इज नॉट ऑर्डिनरी, और ये
ऐसी बुद्धिमता साधारण नहीं है। It is a conclusive essence of the Vedas, गीता एंड रामायणा। ये भगवत गीता का, वेदों का, रामायण का निष्कर्ष निकाला हुआ निचोड़ है। Even if you do not believe, यहाँ तक कि यदि आप विश्वास नहीं भी करते, the truth will remain absolute, तो सच्चाई तो हमेशा सच्चाई रहेगी। It can never be lie, ये कभी झूठ तो नहीं हो सकता। You just have to embrace, बस आपको embrace करना है from your end, आपके उद्देश्यों से। Then even if a void persists, it will be up to God to seal it. यदि आप खाली भी हैं तो ये भगवान पे निर्भर करेगा कि उसको बंद करना है या खुला रखना है। परंतु you must never disregard this, परंतु तुम्हें ये बात नहीं भूलनी है। Once accepted, जब आपने एक बार मान ही लिया, keep on reiterating, बस बार-बार यही दोहराना है, I belong to God, मैं भगवान का हूँ। This will naturally make you pristine and pure, इससे आप ऑटोमेटिकली ही शुद्ध हो जाएंगे, pristine हो जाएंगे। Is God feebler than a philosopher's stone? क्या भगवान एक दार्शनिक के पत्थर से भी ज्यादा कमजोर है? Which transforms metal into pure gold. जैसे एक स्टोन में पास में होती है कि वो किसी भी चीज को प्योर गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। The purity which is attained by acknowledging, वो शुद्धता जो हम ज्ञान को हासिल करके प्राप्त करते हैं, the relationship with God, भगवान से संबंधों के द्वारा, can never be attained by our endeavors, वो हमारे प्रयासों से संभव नहीं है। इसलिए भाग्य बनाने के लिए भी ये आवश्यक है कि हम भगवान के होने को स्वीकारें, उसकी उपस्थिति को मानना ही सबसे बड़ी बात है। उसकी उपस्थिति मानने से ही सब चीज़ें अंदर भगवान नजर आते हैं, तो फिर हमें कोई अभ्यास, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वतः ही ऑटोमेटिकली ही हमारे अंदर शक्ति आती है। The benefit which is not obtained even after years, वो लाभ जो हमें कई सौ वर्षों के बाद भी प्राप्त नहीं होता, and years of सत्संग, काफी सालों के सत्संग के बाद भी प्राप्त नहीं होता, will be achieved in a single day, एक दिन के अंदर ही हम उसे प्राप्त कर जाएंगे। By accepting our belongingness to God, जब हम भगवान से अपने संबंधों को स्वीकार लेंगे। The stronger one associates with people, लोगों के साथ बहुत बड़ा मजबूती का संबंध बन जाता है। And material objects, मजबूत लोगों का material objects से भी संबंध बन जाता है। The lesser one feels about the belongingness towards God, जो lesser होता है, कमजोर होता है, वो भी महसूस करता है कि उसका भगवान के साथ संबंध है। When it is properly understood and acknowledged, जब इसे हम ठीक समझ लेते हैं, जान लेते हैं,
in the entirety of the limitless cosmos, असीमित ब्रह्मांड में पूरे में there isn't even a speck of an object, तो फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पेक बाकी नहीं रह जाता, which belongs to us, जो हमसे संबंध रखता हो। even the body, यहाँ तक कि हमारा शरीर, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, अहम, doesn't belong to us, ये हमसे संबंध नहीं रखते, no exist for us, और नहीं ये हमारे लिए होते हैं। then only can be the actual quintessence experienced and understood, तब हमारे लिए केवल वास्तविक एक ही अनुभव होता है, एक ही समझ होती है। actions by any of the three bodies, तीनों शरीरों के द्वारा कोई भी जो कार्य किया जाता है, इंट्रोस्पेक्शन एंड ट्रांस मीन्स समाधि, इवन दे आर नॉट आज, यहाँ तक कि वे हमारे नहीं हैं, नॉर ऑफ एनी अस, नॉर ऑफ एनी यूज टू अस, नहीं इनका हमारे लिए कोई प्रयोग है। ओनली आफ्टर द डिपार्चर फ्रॉम आवर assumed relation with actions, introspection and trance, हमारे जो बनाए गए संबंध हैं उनसे जब हम केवल मात्र अलग हो जाते हैं अपने एक्शंस के द्वारा, इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा या फिर ट्रांस के द्वारा, what is achieved, इससे हमें क्या मिलता है? that quintessence only is our and for us, तो फिर लास्ट में यही बचता है कि वो हमारे हैं, हम उनके लिए हैं। We are fragments of God only, हम तो केवल एक मात्र उसका पार्ट हैं। till the time a man being, a human being has assumed, जब आदमी ने ये माना है the body, the words are his, शब्द भी उसके हैं, शरीर भी उसका है, and exist for him, उसके लिए ही होते हैं। till then he will listen, जब तक हमने उसको सुनेंगे नहीं, लर्न सीखेंगे नहीं, ऑरेट एंड लेक्चर उसके ऊपर कुछ व्याख्यान नहीं देंगे, बट विल नॉट एडिक्वेटली अंडरस्टैंड, परंतु हम पर्याप्त रूप से नहीं समझ पाएंगे द क्विंटेसेंस, वास्तव में निचोड़ क्या है। द एडवांसमेंट ऑफ ए सीकर, एक देखने वाला जो एडवांसमेंट्स को देखता है will not be substantial, वो substantial नहीं होगा until the relationship with God, जब तक उसके संबंध भगवान से नहीं बन जाते, is acknowledged, जब तक वो जान नहीं लेता। whereas जहाँ तक the progress would be effortlessly humongous if it is acknowledged, I belong to God, accept this from within and your spiritual standing will transform. Furthermore, there will be a comprehensive change in you. You will attain peace, doubts will be cleared and confusions will resolve. Oh dear Lord, I belong to you, accept this much from within, and all your worldly affinities will loosen by themselves. You will not have to struggle to loosen those earthly ties. Recently this thought
has been illuminating with me a lot to embrace our eternal relationship with God. It has been particularly coming to my mind that you must anyhow accept your relationship with God. You may accept God as your son, your father, your mother, your brother, your friend, your guru, your teacher, your disciple, your master, your servant, or whoever you accept him to be. Just accept this much and it will now be tremendously beneficial. You may or may not accept, this is your wish, but I will keep on repeating that is my duty and I will adhere to it. Even if you wish not to accept this, I will not be upset with you, but certainly my heart will not be content. Any sadhana or spiritual practice can never be continuous, but elevation is ever existing. A seeker can pursue any form of sadhana, but must agree on his exclusive relationship with God. Until the time relation with another exists. Till then the sadhana is not absolute. Until the time relation with another exists, till then the sadhana is not absolute. What you believe to be the path towards God realization is not the actual path towards God realization. True sadhana happens only when you accept your relationship with God. For instance, when a married woman visits her mother's place, even while performing all obligations, she never disregards the fact that she is married. She never disregards. Similarly, if you wish to attain God realization, then even while residing in this material world, you must agree from within on your relationship with God. Do not agree to associate even with a sant or a guru, but do respect their teachings. Once you accept that you belong to God, then all your actions will be sadhana for God realization only. I belong to God. God belongs to me. This is the true sadhana. God belongs to us, we belong to God. If the Lord's relation is embraced in this way, then you will not have to purposely try and remember God, but instead you will innately remember Him. In our worldly routine, we have observed that a person is respected based on their material wealth, but in God's routine, one is respected if they are related to God. Just by accepting your relationship with God, all your losses, all worries, all griefs, all clutter will resolve. You will become absolute. It is said that the realization of God is extremely effortless, and it is also told that the realization of God is extremely difficult. If one goes by set norms and regulations, then the realization of God is extremely difficult. But if the heart has a genuine passion for God, then it becomes extremely effortless. Like a child
asserts that the mother is mine. Similarly, God is ours. The heart should have such simple, the heart should have such simple passion. It is exceptionally difficult to attain God realization if the heart lacks passion. God perceives passion. If a child asserts that the mother is mine, what regulation will be applied in this? The child never deems if he is qualified or suitable. By the virtue of this, by the virtue of his affection, he fondly and completely dominates his mother. Similarly, God is mine. Simply accept this. If the child cries, the mother has to attend to her child irrespective of what she was doing. Therefore, simply and honestly, hail, O Lord, O my dear God, O my dear God, God is mine. This one truth surpasses everything. Without asserting any rules and regulations, one should particularly develop this single trait: God is mine. The passion for belongingness should be exceptional and foremost. Disregard every other fact. Don't focus even on your shortcomings, rather gaze only towards the Lord's gracious personality. His gracious personality. There can't be anyone except God who can be ours. No can ever stay with us. For instance, when a mother watches her child play, her heart becomes full of love. Similarly, God's heart is full of love for each one of the souls. He wants to accept them, meet them, and converse with them. But this soul doesn't even glance at God. So it is my request to all of you that however you are, at least remember this thought that God is mine. मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों का कोई. If you accept this, you will never be unhappy again. There is no particular loss. There is no particular loss in accepting this, but pure and pure profit. Body, senses, soul, mind, intellect, etc. Nothing belongs to me, and God is mine. If you accept this, you will be greatly benefited. Greatly benefited. Greatly benefited. Greatly benefited. Nothing else will bind you. Even in times of sickness, you will not be distressed, but would experience eternal joy. Eternal joy. The body might feel lethargic,
but there will be eternal bliss living. Even if you develop 4 to 5 degrees of fever, you stop talking or you collapse. Even then, there will be no difference in the eternal joy within. This is an absolute truth. Since all of you have come for satsang, just accept that regardless of however we are, we belong to God. Simply because of not accepting our belongingness to God, you will have to suffer. There is no doubt about this. And each and every place you will take birth, die, and suffer. Once the relationship with God is accepted, then be joyful. There is no need to do anything else. If you embrace God, then God is happy, and sons are also happy. Everyone contents, no one can be upset, because we are not grabbing somebody else's part, but taking what is rightfully ours. There is no sweat in accepting God, no fee, no learning, no reading, no memorization, and no qualification. There is nothing in this material world that belongs to us. Understand this, and God belongs to us. Accept this. Nothing belongs to us in this material world. You can doubt this plenty. Everything will be accepted, but God belongs to us. No doubts in this will be accepted. This has to be embraced. Initially, the material world is comprehended and God is accepted. Afterwards, God doesn't remain merely accepted but becomes tangible. God constantly gazes at you like a mother gets delighted when her child calls Ma, Ma. Similarly, when you call out that God belongs to you, God gets utterly delightful. You are a fragment of the Lord. You must remember this at all times. I keep on reiterating this because I have developed a particular regard for it only in recent years. I was not aware of its importance initially. For example, a daughter of your house after marriage belongs to the house where she got married. Similarly, you must also embrace your belongingness to God's house. Except this, you are not a bachelor anymore. We are not without a master. Unlike a wild beast, you belong to God. Indeed, you all belong to God forever. You may or may not know, you may or may not accept. Simply transform your sentiment. If you wish to experience God, then you must not regard yourself as a woman or a man. Affirm your relationship with God
that I belong to God. If you embrace your belongingness to God, then it is tremendous achievement. If you affirm yourself as a woman or a man, then how will you achieve God realization? If you affirm yourself as a woman, then you will not only achieve a man, but not God. Affirmation of one's womanhood or manhood is also hindrance in God realization. The distinction between a woman and a man is necessary. The distinction between a woman and a man is necessary for worldly customs and behavior. If you have embraced yourself as the physical body, then how will you experience God? Your inner sentiment only must transform that I belong to God. God relation is such, it slashes all other phony relationships. You may be a sinner, but even then you are with God. Goodness and wrongdoings don't even touch you. You belong to God and God belongs to you. If you forget this, even then, this truth is as it is. As it is. This truth is as it is. Forgetting and not forgetting, each in the mind only. We have held the inert body, material world, so it attracts you towards itself. If you disregard its relationship, then it will not attract. If you accept your relationship with God, then sins of eternal lives will depart. I belong to God, this is not a fact to ponder upon, but rather should be acknowledged. 2 plus 2 is 4 only. What is in it to ponder? It is, if the mind is free of desires, attachment, aversion, but without any sentiment of belongingness towards God, then liberation will be attained, but God will not be experienced. Whereas there is desire, attachment, aversion in the mind, but the feeling of belongingness towards God is present, then God will be experienced. It means that impeccability is related to liberation, but belongingness is related to God. Surgiva was desirous, but he accepted that God belonged to him. The sentiment of belongingness is the most beloved to God. The relationship of belongingness with God is an essential cause in awakening eternal love. God is neither a man, nor a woman, nor a neutral
still. He is everything. That's why you can accept him as a father or a mother, whatever relationship you want to embrace with God. God is ready to accept it by accepting the relationship. The sentiment of belongingness develops. The sooner God is attained by belongingness, cannot be attained through exercise. The close relationship that your son has with you, a similar relationship a servant does not have. A servant is related due to work and profession, but a son is not related by work and profession. When the servant works well, you get satisfied. But even if the son is illiterate or inept, even then he has full right over his father's property. If you perform activities, then you become a servant. But if you establish belongingness with God, then you become a son. You must try and remember that we are a fragment of God, whom no one can be equivalent to. Then how can anyone be greater than Him? So you must not get afraid of material illusions. We belong to God. By remembering this, you will inherently acquire strength. We are not an orphan, we have a Lord. Remember this. Just because of not remembering God with you, got disappointed and disheartened. Will the Lord employ His strength for Himself? Like a mother's milk is for her child and not for the mother herself. Similarly, God's strength is for us. Being a fragment of God, we are not evil. However we are, we belong to God. It's a useless son, not a son. We belong to God, then why should we worry? He who does not belong to God should worry. Nothing except God is mine. Accept this and you will be greatly benefited. There is nothing more joyous and blissful than this. This is the essence of all Shastras and teachings of all Sant Matas, Sant Mahatmas. Chanting the Lord's name, bhajan, kirtan, etc. are not required. You may or may not have control over the mind, but at least accept this much, that there is nothing else except God which belongs to us. How is the Lord? We are not interested in that. However He is Arch, the protector of countless universes. That Paramatma is our Father. Then, for what should we worry? If you accept that God is mine, I belong to God, then there will be a tremendous transformation in you. You will become carefree and fearless. Accept that God belongs to you and all your work is done.
not even a fraction of the task will be left for you to do. Karma yoga, jnana yoga, meditative yoga, bhakti yoga, etc. Nothing will be left. The striver or sadhaka will become complete with all objectives achieved, all knowledge earned, and all desires fulfilled. He who is the guardian of all countless cosmos, that God is mine. If this is accepted, then what else is left and how is left? The essence of love is belongingness for those who are dear to us. We naturally tend to remember them. We remember our wife, son and daughter. Because we love them, we have accepted our belongingness to them. If you want to love God, accept that He belongs to you, then you will naturally remember Him without any effort. Whatever you start liking, the mind automatically goes towards it. God is mine. The power that lies within this is not there in renunciation and austerities. Each and every soul is a child of God. 8.4 million forms of bodies and other bodily forms such as deities, queens, demons, gods, etc. also God's children. If you just accept that we are Lord's child, then what stops you? Once you accept it, then most of your work is done. The state that is not achieved even after years of sadhana will be attained just by accepting this. We belong to God. We have been blessed with this incredible truth. Now what else do we require? If we just don't forget our belongingness to God, then everything will become all right. We will experience. We wouldn't be required to perform sadhana. It will happen naturally. We belong to God. If we remember this truth, then impurities will not come close, they will run away. But if we forget this, then we will surrounded by impurities. We belong to God by accepting this. All of you can become a saint wherever you are. No one can interrupt you from this. Now we belong to God, accept so, and immediately become carefree, fearless, calm and worryless. For instance, a son naturally, without even any education, has complete ownership over his father's property. Similarly, because of your belongingness to God, you will naturally inherit properties of God. When we look at the Mahabharata, we notice that the Lord presented the Pandavas with both favorable and unfavorable conditions in plenty. But it was incredible of the Pandavas that they never disrespected the Lord. Among the Pandavas, Bhishmas had a big mouth, but even he never spoke against the Lord. Such should be the Lord's admirers. Whereas Duryodhana never developed any admiration for the Lord.
He considered the Lord a clever and shrewd man. The Pandavas were incredible in fact that even when conditions moved against their will, they still considered that the Lord belonged to them. Similarly, in situations happening against our will, we should still see that the Lord belongs to us. Numerous things are told concerning God, but those who wish to attain liberation should not dwell on how is God, how not is He. The truth that delivers liberation is there is a God, and however He is ours. The foremost thing is we have a Lord, we are not orphans. This truth should be firmly accepted. The most promising technique to experience God realization is I belong to God. My intellect belongs to nature. Therefore, if the mind intellect is unsettled, then that is nature's problem as I belong to God. As God is immortal, so I am also immortal. Since God never dies, then how can I die? That's why the saints have spoken. I belong to God, God belongs to me. This truth is greater than chanting the Lord's name or Lord's remembrance. This is true devotion. In reality, only he is devotee who belongs to God. He who belongs to God is not an ordinary person. A material person is ordinary. Objects and actions are related to this world. We are in no way related to them. While performing any action, remember that I belong to God, then in what way should I perform the duty? Intuitions will naturally emerge within your mind. If you will love the Lord with an innocent heart, then in what way you should be devoted, this will naturally occur within your mind. God is mind. This is a genesis for love. Genesis for love. Love doesn't arise from renunciation, austerities, etc., but from belongingness towards the Lord. This truth is profound. After many years of delivering discourses, I became aware of this truth. Whatever belongs to us naturally becomes dear to us. We belong to God, God belongs to us. This is no ordinary truth. Such devotion is of high status. There is no sadhana equivalent to it. We belong to God. God belongs to us. We have become aware of this. Now, why will we take another birth? Most conclusive and essence of all is the fact that only God is ours. Except Him, no one else is ours. God is ever present with us. Except Him, no one else stays with us forever. If you accept this truth, then it is greatly benefiting. What comes and goes never belongs to us, but God is always present with us. He never departs. This is the essence of all the Shastras, Puranas and Vedas. So,
behave with love with everyone, serve everyone, respect everyone, and honor everyone. But in your heart, don't consider anyone yours. Within your heart, consider only God as yours. If you acknowledge others as yours, then one day you will have to weep. To serve, everyone is ours, but for ourselves, no one is ours. For ourselves, only God is ours. You may consider God as Saguna, Nirguna, Sakar, Nirakar, etc. Whatever you believe, but He is ours. What I have told you is the essence which is not heard everywhere. If you say in front of Yamraja, the deity of death, also that I belong to God, then even Yamraja will shiver. If you accept your relationship with God, then purity and piousness will naturally come to you. You will belong to God. God belongs to us. By merely uttering this, you will become pure naturally. We might be a disobedient child, but even then, we belong to God. We just have to eradicate our disobedience. Sadhana that happens by the virtue of the body, that sadhana also is known valuable. From within God is smiling. The virtue that this has, isn't not there in chanting etc. performed by the body. Thank you, brothers and sisters. Thank you for your presence today. It is really nice time, nice place, nice section. All of you are listening, providing your valuable time. It is God's grace, His blessings on us that we are interacting with you in the different universities. All of you are enjoying and entertaining today's festival, Dipawali, India's holy festival, India's national festival. Today is also Haryana Day. Numberless pleasures, happinesses you are entertaining, enjoying. May God bless all of you. May God bless all of you. May God bless all of you. Are all Indians, those who are residing in any nation internationally, they know that it is India's national festival and they must enjoy, entertain with lightening their houses, places, cities, villages, everywhere must be lightening. The whole world is enlightened by the knowledge. So Lord Rama came on this earth to teach us, train us, make us for oneness, equality and unity. There should not be any discrimination or any basis like party in politics, any economical factor or any other. But there should be love, universal love, as Indian cultural message, Indian cultural values address, be
helpful for others. Service to man, service to God. Let us share our food, joy, sorrows with others for the welfare of humanity. It is said commonly in all holy scriptures of our holy land, humanity is our religion, humanity is our caste, body is the temple of God, heart is the seat of God. So never forget, always remember this truth, and let us share our joys with others. Thank you, brothers and sisters. Thank you for your presence. Once again, happy Dipawali. Happy Dipawali to all of you.